जी, so the lecture is about the structure of a bacterial cell. In the end of the lecture, I expect you to be able to describe different morphological forms of bacteria and their arrangements. We should also be able to describe and know the basic structures and functions of our bacterial cell. Then we have certain staining characteristics on the basis of these structures that need to be understood. And then we will discuss slightly the role of bacterial structure in lab identification. So talking about the shape and arrangement of bacteria, basically जो है हमारे पास there can be foci and there can be rods. Foci जो हैं जी, they can be bacteria divided, classified into like 3 basic groups. इसमें foci जो हैं, they are basically round shaped, as you can see here in the first row. These are foci. These are round. The bacilli are the rods, right? ये जो straight structures आपको नजर आ रहे हैं, these are the rods. These are called bacilli. ठीक है जी, और इनको बेसिलाई भी कह सकते हैं, इनको रॉड्स भी कह सकते हैं. एक बैक्टीरियम आगे आएगा तो इसका नाम बेसिलस है. बेसिलस एंथ्रेसिस जो एंथ्रेक्स करवाता है, बेसिलस सीरियस, तो उसका नाम ही बेसिलस है. और बिकॉज कि वो शेप की वजह से उसको ये नाम, लाइक हम हर बैक्टीरिया को हम बेसिलस नहीं कहेंगे, उसका एक स्पेसिफिक नाम बेसिलस सीरियस, बेसिलस एंथ्रेसिस उसकी स्पीशीज के नाम के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है. तो मैं उस बेसिलस की बात नहीं कर रही हूँ. जनरली जो है जितने भी रॉड शेप बैक्टीरिया हैं जो राउंड नहीं है, स्ट्रेट हैं, उनको हम रूटीन में रॉड्स कहते हैं या बेसिलाई कहते हैं. ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट. और इसके सिंगल को बेसिलस कहते हैं. लेकिन एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया भी हमारे पास है जो रॉड शेप भी है, पर उसका नाम ही बेसिलस है. लेकिन ये टर्म जो है सिर्फ उस एक बैक्टीरिया के लिए हम इस्तेमाल नहीं करते, हम उन तमाम बैक्टीरिया के लिए यूज करते हैं जो रॉड शेप है. रॉड मीन्स स्ट्रेट, ठीक है, नॉट राउंडेड. तीसरी शेप है जी स्पाइरल शेप है. सो और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं विच आर वेरिएबल इन शेप, दे आर कॉल्ड प्लेयोमॉर्फिक, जो ना बहुत ज्यादा राउंडेड होते हैं ना प्रॉपर रॉड शेप्ड होते हैं, तो उनको हम दे आर वेरी शॉर्ट कोकोबेसिलरी, उसको हम शेप का नाम दे देते हैं. सो बेसिकली जो है इसकी जो प्रॉपर एक शेप है, इट इज बिकॉज ऑफ द रिजिड सेल वॉल. हमने पढ़ा बैक्टीरिया की एक रिजिड सेल वॉल होती है जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पेप्टिडोग्लाइकन के नाम से केमिकल भी एक कंपोनेंट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट. कुछ बैक्टीरिया में वो कंटेंट बहुत थिक होता है, उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कह देते हैं. कुछ में वो थोड़ा थिन होता है जिन्हें हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं. बट एनीवे ऑल बैक्टीरिया हैव अ वेरी रिजिड सेल वॉल. ठीक है, एंड देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन टू दिस वॉल लिस्ट. हमारे पास बैक्टीरिया हैं माइकोप्लाज्मा, दैट इज जस्ट एन एक्सेप्शन. बाकी सारे बैक्टीरिया जो हैं दे हैव अ वेरी रिजिड सेल वॉल. और माइकोप्लाज्मा जो है it is a wall-less bacteria, the only wall-less bacteria, and it has T-role in its membrane. उसके पास cell wall नहीं होती है. So as we move on, we say that not only they have multiple shapes, they also they also show a different arrangement of cells, right? Some exist in pairs. As you can see here, यहाँ पे कुछ नाम नीचे दिए गए हैं जो आज आपको शायद familiar नहीं है, आपके लिए मुश्किल हो, but आहिस्ता आहिस्ता you will see that these are very common names. और यहाँ slide में हम on and off, बेशक आपने भी special bacteriology नहीं पढ़ी, you are not very familiar with these names, but we will keep introducing these names so that you get familiar with these terms. Like in pairs, as you can see, ये हम Streptococcus pneumoniae के जो बैक्टीरिया है इसको यहाँ पे देख रहे हैं. ये देखें, ये दीज आर कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस. तो ये नाम पर ही रखा हुआ है. कोकस मींस राउंड स्फेयर शेप्ड. और यहाँ पर क्योंकि ये पेयर्स में नजर आ रहे हैं, आप ये देख रहे हैं फर्स्ट रो में ये जितने बैक्टीरिया आपको नजर आ रहे हैं, दे आर ऑल राउंड शेप्ड, स्फेरिकल. तो ये सभी जो हैं कोकस पे एंड हो रही हैं. कोकाई मींस गोल, राउंड. स्टेफिलोकोकस, Streptococcus, again Streptococcus here.
सो कोकस मीन्स गोल, राउंड शेप्ड, और हमारी जो एक मेन शेप है बैक्टीरिया की, एक मेजर जो हमारे पास कैटेगरी है, इट इज ऑफ कोकाई एंड द अदर इज ऑफ रॉड्स। ठीक है, फिर एक थर्ड कैटेगरी है स्पाइरल शेप होते हैं, जो आप इधर लास्ट में देख रहे हैं। ये इसमें दिस स्मॉल स्पेसिफिक ग्रुप स्पाइरोकीट्स के नाम से होता है, जो इस कैटेगरी में फॉल करता है। सो ये तादाद इनकी बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, लेकिन कोकाई जो है बड़े कॉमन है। और रॉड्स तो जितने भी सारे सेल्स जो हम कोकाई के अंदर, स्पाइरल के अंदर नहीं जिनको क्लासिफाई करते, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर क्लासिफाइड अंडर रॉड्स। ठीक है जी, हम उनकी क्लासिफिकेशन भी करेंगे, which will be based on again this shape and plus their gram staining properties. लेकिन अभी अब आज हम सिर्फ इनकी शेप्स पे भी फोकस करेंगे। ठीक है जी, सो कोकाई हो गए जी, स्फेरिकल राउंड शेप्ड, पिक्चर में नजर आ रहे हैं। अरेंजमेंट अगर हम देखें तो सम एग्जिस्ट इन पेयर्स, जैसे यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को देख रहे हैं। सम एग्जिस्ट इन चेन्स, जैसे आप यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीनीस के बैक्टीरिया को देख रहे हैं। और सम एग्जिस्ट इन क्लस्टर्स, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, जैसे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस। अभी हमने स्टेफिलोकोकस ऑरियस को लिखना भी सीखा था जब हमने बायनोमियल लेक्चर में इसको देखा था। So we got to know it has two names like all other microorganisms. The first name is the genus name. We started with the capital letter. The second is the species name. It begins with a small letter. Both are italicized. अगर italicized नहीं करना तो हम underline करेंगे इनको अलग अलग। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस क्या हो गया, जिसके बारे में आपको तीन चीजें पता चलेगी। एक सुपर बग, बड़ा कॉमन बग है, एक बैक्टीरिया है, पहली बात तो ये। सेकंड, इसकी शेप क्या है, कोकस। ठीक है, फोकस है और दैट मींस राउंड शेप है। और अभी अब इसकी अरेंजमेंट देख रहे हैं कि ये क्लस्टर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेप लाइक क्लस्टर्स। Then we see these rod shapes. So we can also see that they are existing in multiple forms. लेकिन जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं तो हम बेसिकली कोकाई के अंदर ज्यादा हम इंटरेस्टेड होते हैं। हम कोकाई को मेनली जो है उनकी अरेंजमेंट्स के हवाले से ज्यादा जो है पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन में भी उससे हेल्प लेते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है, इट इज बेसिकली डिटरमिन्ड बाय द ओरिएंटेशन of these cells and the degree of attachment of these bacteria at the time of cell division. उसके अकॉर्डिंगली जो हम देखते हैं कि they are sometimes divided existing as pairs, डिप्लोकोकाई कह देते हैं, जैसे भी आपने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को देखा। sometimes they exist as chains, और जैसे कि बाकी के स्ट्रेप्टोकोकाई की टाइप्स आप देखेंगे डिफरेंट स्पीशीज में, they exist as chains, और फिर ग्रेप लाइक क्लस्टर्स एज इन स्टेफिलोकोकस। ठीक है जी। उसके अलावा अगर हम इनकी साइज की बात कर लें, साइज में मैंने आपको जनरली अभी शुरू में एक आइडिया दिया था कि जब हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर कर रहे थे, आई टोल्ड यू कि स्मॉलेस्ट जो बैक्टीरिया होता है इट इज ऑलमोस्ट अबाउट द सेम साइज एज द लार्जेस्ट वायरस, जो पॉक्स वायरस इज द ग्रुप है। और ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा है, द ओनली वॉललेस बैक्टीरिया, इसे आप याद रखिएगा, द ओनली वॉललेस बैक्टीरिया। बाकी सब जो बैक्टीरिया हैं सबकी वॉल होती है प्रॉपर, एक रिजिड वॉल है एक्सेप्ट फॉर माइकोप्लाज्मा। सो दे आर बेसिकली द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया बट स्टिल बिगर, as big as the largest virus. Longest जो bacterial rods होते हैं, they are almost the same roughly size as that of the yeast and human red blood cell, 7 micrometers. Sorry, micro is missing here. It's micrometers. Micro. ठीक है, सो आपको अंदाजा हो जाएगा जो लार्ज बैक्टीरिया का साइज भी जो है इट्स ऑलमोस्ट द सेम साइज एज दैट ऑफ अ ह्यूमन रेड ब्लड सेल। ठीक है जी। There's a message in the chat box. Let me read it.
Okay. So about the size range, as we show, 0.2 to 5 micrometer. Key range में sometimes they are quoted as 0.5 to 5 micrometer, 1 to 5 micrometer, but roughly जो है, अब जो current हमारा latest edition है Levinson का, उसमें the reference range for the size of these bacteria is 0.2 to 5 micrometer. ठीक है जी? So here you can have an idea of the scale. As you can see, यहाँ पर हम viruses की जब बात करते हैं, तो this is we talking here about the pox virus. ठीक है जी? और here we see the smallest bacteria, mycoplasma, the only wall-less bacteria also. It is almost as big as it is very small as compared to the rest of bacteria, but it is still as big as the one of the largest viruses, the pox virus group, right? And then we see that the rest of the bacteria, as the size is increasing, we see this is the size 7 micrometer. यहाँ पर हमारा red blood cell का size fall कर रहा है, और वहीं पे आपकी protozoa जो different parasites उनकी range शुरू हो रही है. So जो बड़े viruses हैं, they can be like as big as that of a fungal cell or as that of a human red blood cell. So साइज रेंज जो है इसका आइडिया आपको इस फिगर को देख के अच्छी तरह हो जाता है. और सेल बैक्टीरिया जो हैं वायरसेस से इतने बड़े होते हैं कि वी कैन सी देम विद अ लाइट माइक्रोस्कोप. हमें वायरसेस की तरह यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज करने की जरूरत नहीं है. ओके जी. नाउ जब हम सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली वी हैव टू डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल इन एन ऑर्डर. And the structure is basically that it is such that there are certain components which are essential. Essential means that they are going to be present in all types of bacterial cells. ठीक है जी? कुछ structure ऐसे होंगे जो सब में present नहीं होंगे, उनको हम non-essential कहते हैं. So essential कौन से हैं जी? जो हर bacterial cell में मौजूद हैं, जिसके बगैर एक cell complete नहीं होगा. bacterial cell वो कौन से हैं? सेल वॉल है, एज आई टोल्ड यू कि सब बैक्टीरियल सेल्स के अंदर सेल वॉल मौजूद होगी. देयर इज एन द ओनली एक्सेप्शन इज माइकोप्लाज्मा. ठीक है जी? और इसके अलावा नेक्स्ट फीचर जब हम करते हैं तो इट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है? देन वी हैव राइबोसोम्स, nucleoid and mesosome. As you can see, we are talking about a prokaryotic cell. So obviously here it is a prokaryotic cell. So यहाँ पर हम बाकी organelles जो हैं वो हम उनकी बात नहीं करेंगे. Mitochondria, lysosomes, जैसे कि आप एक आम regular human cell में पढ़ते हैं, यहाँ पर आप उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे. ठीक है? तो क्योंकि because it is a prokaryotic cell. Prokaryotic cell क्या होता है? Which does not it does not has a true nucleus like eukaryotic cell, and it basically consists of a single circular molecule of some loosely organized DNA that lacks a nuclear membrane and related mitotic apparatus. ठीक है जी? And the rest of the organelles, they are not present like as in eukaryotic cell. फिर इसका जो ribosome है, it's 70s as compared to the 80s ribosome of the eukaryotic cell. ठीक है जी? And the eukaryotic cell membrane contains sterols, whereas no prokaryotic cell has sterols in its membranes. एक्सेप्शन जो है वो माइकोप्लाज्मा की है. जैसे माइकोप्लाज्मा हमने पढ़ा है, द ओनली बैक्टीरिया दैट डज नॉट कंटेन अ सेल वॉल. तो इसकी सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास स्टीरोल्स होंगे यूकेरियोटिक सेल की तरह, जबकि बाकी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनकी मेम्ब्रेन में हमारे पास स्टीरोल्स नहीं हैं. एनीवे, सो वी मूव ऑन टू द डिटेल्स ऑफ द एसेंशियल कंपोनेंट्स.
और जो नॉन इसेंशियल है उसके अंदर वी विल सी देयर आर सर्टेन स्ट्रक्चर्स, कुछ बैक्टीरिया है उनके पास कैप्सूल होगा, कुछ में नहीं होगा। जस्ट लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट वायरसेस, कुछ एनवेलप्ड होते हैं, कुछ नॉन एनवेलप्ड होते हैं। फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस है, इट इज अ स्पेस बिटवीन टू डिफरेंट मेम्ब्रेन्स। सो बेसिकली ये जो है इट इज नॉट सिंस नॉट ऑल द बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव, तो वहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स नहीं होंगी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, जो हम देखेंगे, जिसकी वजह से पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है वो एग्जिस्ट करती है ग्राम नेगेटिव में, बट ग्राम पॉजिटिव में नहीं होती। देन वी हैव पाइलस, फिब्री, then flagellum, spore, plasmid, granules, and then glycocalyx. So these are the non-essential components. ठीक है जी, इसके बगैर एक बैक्टीरियल सेल कंप्लीट हो सकता है, बैक्टीरियल सेल एग्जिस्ट कर सकता है। सो बट द एसेंशियल कंपोनेंट्स जो हैं वो हर बैक्टीरियल सेल के अंदर होंगे लाजमी। दिस इज द बैक्टीरियल सेल जी, हियर यू सी द पिक्चर हियर। Yes. Here after blocking the view. Okay. It's not willing to leave us. All right जी, so you can see यहाँ पर आपकी जो स्ट्रक्चर्स अभी पड़े हैं उनका हम अगर ऑर्डर में अगर हम देखना चाहते हैं तो बाहर सेल वॉल होगी, फिर सेल मेम्ब्रेन है, अंदर आप देखेंगे कि दिस इज द न्यूक्लियोइड रीजन वी वर टॉकिंग अबाउट, लूजली अरेंज्ड क्रोमोसोम जो है एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर यू डू नॉट सी अ प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस हेयर, और then we have these ribosomes here, so various type के होंगे, and this is the flagellum we were talking about. This is the plasmid here, the capsule in some of the bacteria, as we just read, it is a non-essential component. So just covering the cell wall, right? Generally cell wall तो सारे बैक्टीरिया के अंदर है, लेकिन कुछ में कैप्सूल एक एडिशनल लेयर होगी which will cover the cell wall. ठीक है जी, दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। अभी स्ट्रक्चर की जो डिटेल है वो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड्स में करेंगे। सेल वॉल, सेल वॉल जो है मेनली एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर है, इट इज सराउंडिंग द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। इट मेनली इज कंपोज्ड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इंटरवोवन नेटवर्क that surrounds the entire cell. It is composed of a single covalently linked macromolecule. As I told earlier, it is found only in the bacterial cell wall, right? Function में क्या, कोई cell wall जो है it gives a proper cell shape, osmotic stability देती है, transportation of molecules में important है, और antigenic properties देती है। अब अगर हम पेप्टिडोग्लाइकन के अलावा हम बाकी के इसके कंपोजिशन पे गौर करें तो you will realize that पेप्टिडोग्लाइकन is a major main component of the cell wall of bacteria. ठीक है जी, इसका स्ट्रक्चरल डिटेल जो है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। लेकिन अगर हम सेल वॉल के ही नेक्स्ट मजीद कुछ कंपोनेंट्स पे गौर करें तो देन वी विल सी दैट वी हैव टाइकोइक एसिड एंड वी हैव लाइपोपोलिसैकेराइड्स। ठीक है जी, टाइकोइक एसिड्स जो हैं basically these are fibers that are located in the outer layer of gram positive cell wall. अब ना gram positive और gram negative जो है इनको भी आप सिर्फ इतना स्टेनिंग जो है एक्सपेरिमेंट उसके लिहाज से आप याद रखें, देयर इज अ स्टेनिंग प्रोसीजर। लैब में हम एक टेक्निक यूज करते हैं बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए, या स्टेनिंग टेक्निक इज यूज्ड इन द नेम ऑफ ग्राम स्टेनिंग। जो बैक्टीरिया हमें पर्पल नजर आते हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, जो पिंक नजर आते हैं उन्हें हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। पर्पल और पिंक का जो डिफरेंस है, अभी हम लास्ट हमारा जो आज का कुछ स्लाइड्स होंगी उसके अंदर हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर पढ़ेंगे। आप देखेंगे कि ड्यू टू द कंटेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो पेप्टिडोग्लाइकन्स हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत थिक होंगे। तो जब हम पहला पर्पल स्टेन इससे हम बैक्टीरियल सेल के लिए यूज करेंगे तो इट विल रिमेन पर्पल ड्यू टू दिस थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। एक बार जब इसके अंदर ये पर्पल स्टेन चला जाएगा तो उसके बाद हम इसको वॉश करने की कोशिश भी करेंगे तो ये वॉश नहीं होगा, इट विल बी रिटेन्ड इन द पेप्टिडोग्लाइकन्स। इसीलिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया who have thick amount of peptidoglycans in their cell wall, they will stain purple, they will remain purple. ठीक है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं they have a very thin content of peptidoglycans in the wall,
ठीक है, एंड दे विल नॉट बी एबल टू रिटेन दैट पर्पल डाई वेरी लॉन्ग। जब हम उसको बाद में एक पिंक डाई से काउंटर स्टेन करेंगे तो पर्पल स्टेन जो है इन बिटवीन प्रोसेस में वॉश अवे हो जाएगा, जबकि पिंक स्टेन जो है वो रह जाएगा। तो जो बैक्टीरिया पिंक कलर के स्टेन होंगे ग्राम नेगेटिव कहलाएंगे। ग्राम नेगेटिव मीन्स दे आर स्टेनिंग पिंक। Why they are staining pink? Because there is very little amount of peptidoglycans in their walls, and that's why they cannot retain the purple dye, the first dye that was used to stain them in the initial steps. ठीक है, so gram positive purple and gram negative pink. अब ग्राम पॉजिटिव जो है ये तो एक बेसिक डिफरेंस है पेप्टिडोग्लाइकन्स का, जिसकी वजह से उसके अमाउंट का जिसकी वजह से आप इनको ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके अलावा जो है देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस इन द सेल वॉल। टाइकोइक एसिड होता है, दीज आर फाइबर्स बेसिकली दैट आर लोकेटेड इन द आउटर लेयर ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ठीक है, दे एक्सटेंड आउट फ्रॉम द ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड दे इंड्यूस इन्फ्लेमेशन and they can even cause septic shock in diseases which are caused by gram positive bacteria. फिर लाइपोपोलीसेकेराइड्स जो हैं, लाइपोपोलीसेकेराइड्स भी एग्जिस्ट करती हैं, और लाइपोपोलीसेकेराइड्स जो होती हैं ये बेसिकली ग्राम नेगेटिव की जो आउटर मेम्ब्रेन जो होती हैं उसमें मौजूद होती हैं। जो सेल वॉल है उसकी बाहर आउटर मेम्ब्रेन्स में लाइपोपोलीसेकेराइड्स होंगी, और ये बेसिकली दे आर मेनली रिस्पॉन्सिबल, दे आर बेसिकली द एंडोटॉक्सिन ऑफ द ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। ठीक है जी, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड शॉक इन डिजीजेस व्हिच आर caused due to the endotoxin of the gram negative bacteria। ठीक है जी, तो अभी आपने इसकी फिलहाल जो है एज एन इंट्रोडक्शन आपको ये पता आपने याद रखना है कि पेप्टिडोग्लाइकन्स आर पॉजिटिव प्रेजेंट इन all bacterial cell walls, लेकिन it is thicker in gram positive and it is very thin in gram negative। ठीक है जी, इसके अलावा gram negative की gram positive की सेल वॉल में टाइकोइक एसिड जो है is an additional component। These what are teichoic acid? These are fibers. They are composed of either glycerol phosphate या ribitol phosphate। अभी हम देखेंगे next slides में। ठीक है जी, and importance क्यों है? Because this is basically able to induce inflammation and shock in gram positive bacteria। ठीक है जी, and in the same way as in the same way lipopolysaccharides are responsible for fever and shock like symptoms in the case of gram negative bacteria। ठीक है जी, सेल वॉल मेनली जो है इट मेंटेन्स द सेल शेप, ऑस्मोटिक स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, बहुत से मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन इसके थ्रू होगी, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज रखती है, जिसकी वजह से इसको लैब में आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। Here again you see this is the cell wall of gram positive bacteria and this is the cell wall of gram negative bacteria। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कैप्सूल दिखाया जा रहा है। So not all, it is not any essential component, लेकिन बहरहाल यहाँ पे दोनों बैक्टीरिया में अगर हम ऊपर से नीचे from outside to inside अगर आते हैं, so capsule is shown in both the cells। Then here this is the thick layer, this is the thick layer of peptidoglycan। You can see that it is present in gram positive bacteria। ठीक है जी, हम बाहर से अंदर जब आते हैं तो we can see 3 layers here in case of gram positive bacteria। There is this capsule, then we have this peptidoglycan layer, the cell wall, and then the cytoplasmic membrane, right? So outside to inside, capsule के नीचे आपको cell wall नजर आ रही है, which is very thick layer of peptidoglycans। ठीक है जी, and then we have the cytoplasmic membrane, right जी। ये जो peptidoglycan layer है, it is made of peptides and sugars as the name depicts। ठीक है जी, इसको हम म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं, और इसके स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ और सिर्फ वॉल का कंपैरिजन यहाँ पे देखेंगे। सेल वॉल जब हम ग्राम नेगेटिव की जब देखेंगे, यू विल सी दैट दे आल्सो हैव एन आउटर मेम्ब्रेन हियर। कैप्सूल के नीचे यहाँ पे देखेंगे, इट आल्सो हैज एन आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस आउटर मेम्ब्रेन कंटेन्स दैट एंडोटॉक्सिन, द लाइपोपोलीसेकेराइड्स जिसकी हम बात कर रहे थे। जबकि ग्राम पॉजिटिव के अंदर हम बात कर रहे थे टाइकोइक एसिड की, द फाइबर्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल वॉल
outer portion of the cell wall of the gram positive bacteria. ठीक है जी, जबकि or which is responsible for causing inflammation and shock-like symptoms in infections caused by gram-positive bacteria, right? जबकि gram-negative में हमारे पास यहाँ पर you will see that we have these outer membranes here, and in outer membrane के अंदर lipopolysaccharides होते हैं, जिसका जो lipid A portion होता है, it is mainly responsible for the, which is endotoxin, which is mainly responsible for the endotoxic shock caused by or seen in gram-negative bacteria. ठीक है जी. उसके अलावा यहाँ पर हम देख रहे हैं flagella बाहर आ रहा है, which is mainly responsible for motility in some bacteria. Then we can see the pilus, this hair-like projection, which में ये you can see here, it is also coming out from the membrane, but ये non-essential components हैं, so ये सब में नहीं होंगे. यहाँ पर आपको essential components में जो देखना है, basically cell wall पे work करना है और membrane पे work करना है. Cell wall of the gram-positive bacteria is thick peptidoglycan layer, जबकि यहाँ पर हम देखेंगे that of gram-negative bacteria is very thin layer of peptidoglycan, but additional outer membrane, like which has lipopolysaccharides, which are responsible for the endotoxic shock in gram-negative bacteria. Now, peptidoglycan के structure को अगर हम देखें तो peptidoglycan बना किससे हुए है? I told you it is a chain of basically it is a peptides and sugar की पूरी एक जो structure है उससे मिलके बनता है. It has a backbone of carbohydrate which has alternating, you see, acetylglucosamine and acetylmuramic acid units. They are alternating with each other. And attached to each of the muramic acid is a tetrapeptide. You see here the tetrapeptide. It consists of B and L amino acids basically. ठीक है जी. Here these the precise, they are D and L amino acids and their precise composition जो differs from bacteria to bacteria. So उसके अलावा जो यहाँ पर अब और तलब बात होगी, एक तो आप ये देख रहे हैं कि sugar backbone है यहाँ पर जो N-acetylglucosamine और glucosamine और muramic acid की बनी हुई है. Then we have these tetrapeptides. ये चार आप देख रहे हैं. There's a group of amino acid chain यहाँ पर जो अटैच्ड है आपके muramic acid के मॉलिक्यूल के साथ, ये ग्रीन वाले जो हैं, ठीक है. And then you can also, another thing that you have to see is the transpeptide, the peptide interbridge. The ठीक है जी. ट्रांसपेप्टाइड चेन्स क्या हैं? जो एक पेप्टाइड पेप्टाइड को दूसरे टेट्रापेप्टाइड के साथ लिंक करेंगे. जो क्रॉस लिंकिंग यहाँ पर हो रही है टेट्रापेप्टाइड को जो कनेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर ट्रांसपेप्टाइड. ये दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्यूचर में जब हम ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे जो ब्रेक डाउन करते हैं इन स्ट्रक्चर्स की, तो देन वी विल नो कि अच्छा उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है उसके लिहाज से ये साइट कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट. सो the sugar backbone, and then there are peptide chains of these amino acids जिनकी composition vary करती है from bacteria to bacteria, and then these are all the peptide chain is attached to the muramic acid molecule, and then there is a transpeptide bond. There is a cross linking between the peptide chains that connects all these tetrads together. ठीक है जी. Now so जब ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है इसकी थिकनेस वेरी करेगी फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव टू ग्राम नेगेटिव. ग्राम पॉजिटिव में बहुत लेयर थिक होगी जिसकी वजह से दे अपीयर पर्पल अंडर माइक्रोस्कोप, जबकि ग्राम नेगेटिव में पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर बहुत थिन होगी एंड इट विल नॉट बी एबल टू रिटेन द पर्पल डाई, जिसके बारे में स्टेनिंग प्रोसीजर अभी हम इनमें देखेंगे. सो इट विल नॉट, और आप प्रैक्टिकल क्लास में भी अपनी कवर करेंगे ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर, देन यू विल नो ईच एंड एवरी स्टेप कि कैसे फर्स्ट पर्पल स्टेन यूज किया जाता है, फिर उसे वॉश करने के लिए एसीटोन अल्कोहल यूज की जाती है. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे उनमें से वो उन पे वॉशिंग का इफेक्ट नहीं होगा एंड दे विल स्टिल स्टेन पर्पल, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होंगे उनको जब एसीटोन अल्कोहल से वॉश किया जाएगा तो दे विल लूज द पर्पल स्टेन एंड दे विल पिक अप द नेक्स्ट काउंटर स्टेन व्हिच विल बी पिंक इन कलर. सो वो नया स्टेन लेके पिंक कलर के नजर आएंगे अंडर माइक्रोस्कोप बिकॉज उनका जो पेप्टिडोग्लाइकन कंटेंट था वो बहुत थिन था. So then we had the lipopolysaccharides, as I told you, gram negative की walls में there was that outer membrane, and we had those that had a lipid A portion which was responsible for causing the which was the endotoxin of the gram negative bacteria. It was mainly responsible for the fever and shock like
symptoms endotoxic shock, which is caused by the gram-negative bacteria, right? And then we have the polysaccharides. They have antigenic properties, so they can be identified by the immune system, and this property can be used to detect these pathogens in the lab. And teichoic acids, as I told earlier, they are present on gram-positive bacteria, fibers that extend from the outer layer of gram-positive walls, right? So they are responsible. इनका वही काम है gram positive bacteria में, जो कि lipid A का या lipopolysaccharides का रोल था gram negative bacteria के अंदर. So they cause septic shock, which is by gram positive bacteria, and they can also help in the attachment to mucosal surfaces, for example, in case of Staphylococcus. Then we talk about the cytoplasm of the bacterial cell. It has two distinct regions. Cell wall के नीचे क्या आ जाएगी जी? Cytoplasm आ जाएगा, amorphous होगा उसका एक portion, and then we will have जिसमें nutrient granules होंगे, ribosomes होंगे, and then we have the nucleoid region, the cytoplasm. Granules जो हैं, they mainly contain the high energy phosphates, the nutrients. Nucleoid region जो है, you will see that there is no proper nucleolus, no mitotic spindles, no nuclear membrane, so it's not a true nucleus like a eukaryotic cell. Then there are plasmids. Basically plasmids जो हैं, this is extra chromosomal material. ठीक है जी? Plasmids क्या हैं? ये ring like structures आपको नजर आ रहे हैं, and they are extra chromosomal because ये nuclear region के बाहर आप इनको हमें नजर आते हैं. Double stranded होंगे, circular DNA molecules, and they are capable of replicating independently of the bacterial chromosome. ठीक है जी? Self replicable होते हैं. So double stranded हैं, extra chromosomal क्यों कह रहे हैं? Because they exist outside the nucleoid region. You see here in this picture, this is the nucleoid region to bacterial chromosome जिसके अंदर होता है, और this is the plasmid. ये ring like structure है, extra chromosomal because it lies outside the nucleoid region, double stranded है, circular है, DNA molecules, और self replicable. ठीक है जी? It is able to replicate on its own. So although they are extra chromosomal, they can be integrated into the bacterial chromosome also. ठीक है? फिर they can be transmissible, they can be non-transmissible. Transmissible means these plasmids can be transferred from one cell to the other cell, one bacterial cell to other cell by conjugation. It is a very interesting phenomena. जब हम bacterial genetics पढ़ेंगे, we will see कि human cell में ऐसे नहीं होता. When two cells come close to each other, तो उनमें DNA material जो है वो exchange ऐसे नहीं होता. जबकि bacterial cell में when they come close to each other, they form a bridge between each other and they can transfer their genes. This plasmid can be transferred. A portion can be transferred from one bacterial cell to the other cell, and hence this is how they pass on certain genes from one cell to the other. और यही वो जीन्स हैं जिनसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है बहुत कॉमनली हम जब आजकल सुनते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बहुत ज्यादा बहुत सारी एंटीबायोटिक्स जो पहले असर करती थी और जो अब काम करना छोड़ गई हैं, उसके अंदर प्लाज्मिड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. बिकॉज थ्रू प्लाज्मिड्स बैक्टीरिया जो पहले ससेप्टेबल होते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स को, दे एक्वायर सम रेजिस्टेंट जीन्स फ्रॉम देयर फेलो बैक्टीरिया. ठीक है? थ्रू दीज प्लाज्मिड्स कॉन्जुगेशन इस प्रोसेस के थ्रू, and then they become resistant. So जो पहले susceptible थे वो resistant बन जाते हैं. Then they can also transfer genes for sex phylus through these plasmids. So then we have bacterial capsules. प्लाज्मिड्स के साथ हम ट्रांसपोसोम्स की बात भी यहाँ पे करेंगे, जिसको हम ज्यादा जेनेटिक्स में डिटेल से करेंगे. ट्रांसपोसोम्स आर पीसेस ऑफ DNA that move readily from one side to another, both within, or between DNAs of bacteria, plasmids, and bacteriophages. So transposomes का भी अब सिर्फ नाम सुन लें. We will do its detail in the chapter of bacterial genetics. ठीक है जी? क्या होते हैं? Jumping genes होते हैं, pieces of DNA that readily move from one side to another. ठीक है जी? कभी क्रोमोसोम से प्लाज्मिड के ऊपर, कभी प्लाज्मिड से क्रोमोसोम के ऊपर, कभी एक सेल से दूसरे सेल के जो स्ट्रक्चर में जो है वो एंटर हो जाते हैं. So
अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स विच आर आउटसाइड द सेल वॉल। अभी हमने सेल वॉल देखा, हमने साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड और हमने इसके प्लाज्मिड्स की बात की। अब बैक्टीरियल कैप्सूल जो है, as we told, it's a non-essential component. It is not present in all types of bacterial cells. Gelatinous layer होती है, polysaccharide in nature. Importance है इसकी because it is anti-phagocytic. अब आप इंफॉर्मेशन, जनरल पैथोलॉजी थोड़ा सा रिकॉल करें, जिसमें आपने इंफॉर्मेशन के सारे स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें आपने देखा कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी या कोई बैक्टीरिया जब ह्यूमन सेल के अंदर एंटर होता है तो बहुत सारे जो हमारे फेगोसाइट्स हैं, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो अटैक करते हैं, इस पैथोजन को किल करने की कोशिश करते हैं। और किस तरह करते हैं? बाय थ्रू द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। सो जो बैक्टीरिया जिनके पास कैप्सूल होगा, they will be anti-phagocytic because ये कैप्सूल जो है, इसको फेगोसाइटोस करना is not easy for these white blood cells, these phagocytes. ठीक है, so it has that anti-phagocytic properties। का मतलब ये है कि जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होंगे, इनकैप्सुलेटेड जिन्हें कहा जाता है, they will be strong, they will be powerful, they cannot be destroyed just like by an ordinary mechanism like any other cell. They will be strong, they will have to, the cell will have to fight with them, right? So anti-phagocytic is a very important feature। तो जो बैक्टीरिया जिनके पास कैप्सूल है, थैंक्स गॉड के हर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल नहीं है, वरना उनको किल करना ह्यूमन सेल के लिए उतना ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ये एंटी-फेगोसिटिक होते हैं। फिर एंटीजेनिक होते हैं। एंटीजेनिक का मतलब है दे elicit a certain immune response in the human body, in the host cell। ठीक है, it acts as an antigen। तो बॉडी में अपने अगेंस्ट एंटीबॉडीज क्रिएट प्रोड्यूस करवाने की कैपेबिलिटी रखता है, और उन एंटीबॉडीज की बेसिस पर या एंटीजेंस की बेसिस पे इनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी। then it helps in adherence to certain mucosal surfaces, to certain structures। so बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी जो है वो बढ़ाने में कैप्सूल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। so these are all features which are basically helpful in making the bacteria more powerful। तो बैक्टीरिया को तो वो स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, लेकिन ह्यूमन सेल के लिए या होस्ट सेल के लिए, किसी भी होस्ट टिश्यू के लिए या सेल के लिए ये कोई इतनी अच्छी इंडिकेशंस नहीं होती हैं। इसीलिए जो ये बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल मौजूद होगा, ये थोड़े स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन है वो ह्यूमन बॉडी में कॉज कर सकते हैं। ठीक है, यू सी देम हियर, ये बैक्टीरिया हैं जी, पर्पल कलर के आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे ग्राम पर्पल मींस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको दिखाए गए हैं, और इनके साइड पे जो अनस्टेन्ड एरिया इट इज शोइंग कि इनका कैप्सूल है। ठीक है, नेगेटिव स्टेन इट शोज अनस्टेन्ड कैप्सूल। ये जो हेलो सा बना हुआ है, ये पर्पल पर्पल सेल्स जो बने हुए आपको नजर आ रहे हैं, और ये कौन से सेल्स हैं? ये फोकाई नजर आ रहे हैं आपको। फोकाई मींस राउंड शेप्ड। हमने पढ़ा दो शेप्स थी बैक्टीरिया की, राउंड और स्ट्रेट। स्ट्रेट को हम रॉड या बेसिलाई कह देते हैं, जो राउंड है वो फोकाई शेप्स है। ठीक है, फिर दे कैन बी पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, और दे कैन बी ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव मींस ये पर्पल नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और कैप्सूल नजर आ रहा है। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज ऑफ दिस अनस्टेन्ड एरिया अराउंड दीज सेल्स। ये बाहर पिंक पिंक तो टिश्यू है ना, उसमें ये पड़े हुए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पड़े हुए। तो इसके साइड पे जो आपको ये अनस्टेन्ड पोर्शन नजर आ रहा है, दिस इज द कैप्सूल। ठीक है जी। इज देयर एनी क्वेश्चन सो फार? जी, इज देयर एनी क्वेश्चन? इज एवरीवन? नो, ओके, थैंक यू आदिल। ओके जी, देन वी टॉकिंग about, जब हम आउटसाइड स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करें, सब फ्लैजेला इट इज एन ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी। इसके डिफरेंट पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। द बेसल एपरेटस, बेसल बॉडी है, हुक शेप्ड है, एंड देन दिस इज द फिलामेंटस पार्ट। ठीक है जी। सो फ्लैजेला जो है, फ्लैजेलम सिंगल होता है, मल्टीपल को फ्लैजेला कहते हैं। सो इट इज एन ऑर्गन ऑफ मोटिलिटी। जिन बैक्टीरिया में होगा, इट विल हेल्प देम, इट विल फैसिलिटेट देयर मूवमेंट, और ऑब्वियसली फिर इससे उसकी पैथोजेनिसिटी जो है वो भी इनहैंस हो जाएगी, because it will be motile, more it will be able to move through cells and move through the body of the host cell, and
reach the time, we reach the target in causing infection there. So it is also again making it more pathogenic. So here you see, according to the position, location of these flagella, they can be peritrichous, which are all cells which are all surrounded by flagella all around. And monotrichous and polar, this makes single flagellum आप देखते हैं, and it is at one pole. Lophotrichous and polar, it is again at one pole, but there's a bunch of flagella. Then amphitrichous, ये polar हैं, दोनों तरफ हैं, दोनों poles पर हैं, and both poles are having a single flagellum on each side. जैसे spiral shaped bacteria में दिखाया जा रहा है. So this is amphitrichous, like because it has flagellum on both sides. ठीक है जी. Then PILI हैं. These are hair-like filaments. They are composed of proteins, pilin proteins होती हैं. Short होते हैं as compared to flagella, और straight होते हैं. Flagella में हमने देखा था वो filament-like curve. ये short, straight projections होती हैं, hair-like projections होती हैं. Important क्यों हैं? Again, as you can see here, ये human cell दिखाया जा रहा है. Urethral cells हैं. ये लीवन ऑफ यूरिथ्रा है, और इसके अंदर हम देखते हैं कि कितने आराम से बैक्टीरिया अपने पाइली के थ्रू, अपने पिलाई या फिम्ब्रिया के थ्रू अटैच हो सकते हैं इन यूरिथ्रल सेल्स के साथ, और एक बार यहाँ पर एंटर हो जाएंगे तो यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. सो दे हेल्प इन अटैचमेंट, एंड सम ऑफ देम कैन आल्सो टेक पार्ट इन कॉन्जुगेशन. सेक्स पिलस उसे कहते हैं. देन दे यू नो द टू बैक्टीरियल सेल, they can exchange the sex pilus, and the exchange of fertility factor. F positive can be, F negative can become F positive cells. की डिटेल हम genetics के चैप्टर में जरूर कवर करेंगे, but then in that case it will be a sex pilus. GLYCOCALYX, it is a slime layer immediately outside the capsule exists करती है. In some of the bacteria it covers the surface like a film. ठीक है, sticky सी जो है surface इसकी बन जाएगी बैक्टीरिया की, and it allows the bacteria to adhere firmly to various structures. ठीक है जी, like skin है, heart valves हैं, prosthetic joints, catheters. So वहाँ पर एक ये biofilm बनाने की tendency जो बैक्टीरिया के अंदर होती है, वो that is basically due to this GLYCOCALYX layer. इसकी डिटेल जो है GLYCOCALYX की कि कैसे हम बाद में फोरम सेंसिंग और हम जब पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसकी डिटेल करेंगे, कि हम इसके स्ट्रक्चर तक अपने आप को कंफाइन रखेंगे, बिकॉज आज का जो हमारा द स्कोप ऑफ लेक्चर इट कवर्स मेनली द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, तो हम इसकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई वुड जस्ट मेंशन हियर कि ये होता क्या है, अभी एग्जिस्ट कहाँ करता है आउटसाइड द कैप्सूल है, नॉट इन ऑल बैक्टीरिया, इट्स अ नॉन एसेंशियल कंपोनेंट, लेकिन इट हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म बायोफिल्म्स, जिसकी वजह से बैक्टीरिया एडहियर कर जाते हैं टू डिफरेंट प्रोस्थेटिक्स, आर्टिफिशियल यानी कि जो आपके जॉइंट्स होते हैं या इम्प्लांट्स होते हैं उनके साथ जाके अटैच करके वहाँ पे इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं. ठीक है जी, लाइक यहाँ पर टीथ के ऊपर दिखाई दी है बायोफिल्म बनी है, जिसे बाद में फिर स्केलिंग वगैरह के थ्रू क्लीन किया जाता है. यू सी दैट. सो यहाँ पर कैप्सूल है और इसके ऊपर ये स्लाइम लेयर जो है, दिस द पॉलीसैकेराइड लेयर, इट इज कवरिंग द bacterial cell. ठीक है. Spores, bacterial spores is another very highly resistant form. Whenever there are adverse conditions क्या हैं, जब कार्बन नाइट्रोजन की डिप्लीशन हो गई एनवायरनमेंट में, बैक्टीरिया जो है, not all bacteria do. This is the non-essential component, so not all of the bacteria will show this property. Only certain spore forming bacteria जैसे कि Clostridium है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई जो है बड़ा कॉमन बैक्टीरिया है, जो टेटनस एक डिजीज है जिसका नाम आपने सुना होगा, वो कॉज करता है. सो टेटनस जो है वो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई के स्पोर्स जो हैं बेसिकली जब रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर हम रिकमेंड करते हैं कि यू नो बच्चों की फौरन को वैक्सीनेशन करवाई जाए, फौरन टेटनस साइड का वो टीका लगाया जाता है, बिकॉज we are afraid that the spores of these bacteria you know can be there and they can survive you know for long periods of time. ठीक है जी, because spore क्या है, it is a highly resistant form. जैसे बैक्टीरिया में there is deficiency of carbon, nitrogen in the environment, nutrients repeat होते हैं, so they have a tendency to you know enclose themselves in a round shaped structure, in a spore like structure. ठीक है जी. So वो once formed, it forms
this is a form which is made inside the cell. ठीक है ना? It contains, इसके अंदर सारे जो essential component एक bacterial cell को दोबारा जिंदा रहने के लिए चाहिए हो सकते हैं, वो मौजूद होते हैं. इसके contains a bacterial DNA, a small amount of cytoplasm, cell membrane, peptidoglycans, very little water, और एक बिल्कुल thick keratin coat में ये अपने आप को close कर लेता है, as you can see here. ठीक है जी, keratin like coat होगा, and this coat is actually making it resistant to heat, to dehydration, to radiation, to chemicals, जिसकी वजह से इन spore forming bacteria को बाद में इनकी presence में disinfection भी जो है, या you can say that decontamination of surfaces is not easy. ठीक है जी. So और इस resistant अंदर एक special एक dipicolinic acid, a calcium channel chelator is found in these spores, जिसकी वजह से ये हाईली रेजिस्टेंट होती है. फिर कैरेटिन लाइक जो स्पोर कोट है, these both structures are making it highly resistant. ठीक है जी. So ये वो प्रॉपर्टी है जो बैक्टीरिया को, जब आप you must have heard about pasteurization, different techniques that we use to decontaminate different liquids like milk को अगर हमने करना होता है तो हम pasteurization के थ्रू करते हैं, but we always say कि spores को kill नहीं करेगा. Why? Because spore is a very highly resistant structure due to the presence of these the dipicolinic acid, the keratin coat, so it cannot be easily destroyed. बैक्टीरिया की जो पैथोजेनिसिटी है वो स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया की, वो इसकी वजह से इट इज मल्टीफोल्ड. ठीक है जी. सो इसको किल करने का एक ही तरीका होता है, दिस इज बाय ऑटोक्लेविंग. ऑटोक्लेविंग इज 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन पढ़ेंगे, यू विल सी के अंदर हाई प्रेशर, सिर्फ अंदर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर्स, मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर कैसे हम वी कैन गेट रिड ऑफ दीज बैक्टीरियल स्पोर्स. अदरवाइज they have whatever they have all the essential components to build a life once again. ठीक है जी. जैसे ही हालात साजगार होंगे, whenever the bacterial cell will be coming out of that adverse condition, जब favorable conditions आएंगी तो the spore is able to get back to its original form, और बिल्कुल एक नया बैक्टीरियल सेल जो है वो उससे बन सकता है, बिकॉज इट हैज ऑल एसेंशियल कंपोनेंट्स, ऑल एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देयर. सिर्फ ये कुछ अरसे के लिए एडवर्स कंडीशंस में अपने आप को इसके कैरेटिन कोट के अंदर बंद कर लेता है, सो दैट इट कैन सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. सो इट इज अ वेरी स्मार्ट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, द स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, जो कि सालों साल तक जो है वो अपने आप को जिंदा रहने के लिए उन्होंने एक स्पोर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो जब प्रोड्यूस कर लेते हैं तो दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. और ना सिर्फ ये कि ये बहुत अरसे तक सरफेसेस के ऊपर मौजूद रह सकते हैं, ये डिकंटामिनेशन में भी बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. सो ऑटोक्लेविंग इज द ओनली चॉइस, the only option that is there to kill these bacteria. So in spores की वजह से you can see here they can be even identified. bacteria जो है अपनी spore की कुछ में terminal spores होते हैं, so club shaped, spoon shaped bacteria या rods जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम है हमें नजर आते हैं. कुछ में सेंटर में आपको स्पोर्स नजर आएंगे, सेल के सेंटर, कुछ में सब टर्मिनल होंगे नियर द एंड. So according to location of spores we can identify them as well. लेकिन mainly जो इनका पैथोजेनेसिस के अंदर रोल है अगेन वो ये कि they are highly resistant. They are resistant to many chemicals, many disinfectants. Due to this thick keratin coat, they are resistant to heat. They cannot be easily destroyed unless we autoclave them, and then they can also cause certain specific diseases when they are when they find favorable circumstances. So under ideal conditions they can cause like Clostridium, it can cause tetanus. Bacillus भी जो एक spore forming bacteria है, Bacillus anthracis का नाम मैंने पहले लिया था, ये एंथ्रेक्स की डिजीज कॉज करता है, और आपने सुना होगा एंथ्रेक्स के स्पोर्स को किस तरह बायोवॉर के तौर पे यूज किया गया था in early like a few years ago. और इस तरह जो है इनके थ्रू जो है इजीली डिजीज स्प्रेड की गई थी, बिकॉज वो इनहेलेशनल जो है एंथ्रेक्स जो है
that can easily be caused through the inhalation of these spores. तो इसकी जो स्प्रेड थी, जिससे कोविड अभी आजकल हम पेंडेमिक में देखते हैं कि इसकी स्प्रेड जो थी, इट वाज अ मेजर चैलेंज. तो इसी तरह बैसिलस की जो स्प्रेड थी, it became, it was used as a bioweapon. It became a challenge for public health specialists and WHO worldwide. But thankfully it was controlled. So now to summarize, मेनली जो है आपने अपने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल कंपोनेंट्स की जितनी डिटेल्स हमारी इस चैप्टर के अंदर हमें इस लेक्चर के स्कोप में थी, हम कवर कर चुके हैं. सो लास्ट 2-3 मिनट्स में आई विल जस्ट सम अप द स्ट्रक्चर्स जो हम अभी इससे पहले जिनको हमने ज्यादा अटेंशन अगर नहीं दी तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगी. यू सी वी हैव एसेंशियल कंपोनेंट्स लाइक सेल वॉल है, जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जैसे कि लाइपोपोलिसैकेराइड्स की बात हो रही थी, एंड देन ग्राम पॉजिटिव के अंदर सरफेस फाइबर्स हैं टाइकोइक एसिड के नाम से. देन वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स which do not have sterols, except there was one exception, mycoplasma की, जिसमें sterols होते हैं, and this is the site of oxidative and transportation and enzyme transportation. And we have ribosomes 50 and 30s, 70s का होता है जी bacterial ribosome as compared to human cell जहाँ पे 80s का होता है. It takes part in protein synthesis and is also the site of action of many antibiotics. बहुत सारी antibiotics जो हैं they stop the 50s or the 30s subunits, and this is how they attack bacteria. Antibiotics है ना, इनका काम है बैक्टीरिया को किल करना. कैसे किल करेंगी? Some will attack at its 50 subunit and some will attack at the 30 subunit, and they will stop the process of protein synthesis, and obviously then bacterial replication, bacterial production will stop. So this is how they fight with bacterial infection. Then nucleoid में DNA है, genetic material, mesosomes क्या होती है जी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इमेजिनेशन है which participates in cell division. हमने देखा था कि बैक्टीरिया they multiply by binary fission. तो उस binary fission में जब cell division का वक्त आएगा तो imagination जो मेसोसोम की फॉर्म में है, it will help in the division of cell. Non-essential components में capsules हैं. As I told you, they are mainly anti-phagocytic. एंटीजेनिक भी होते हैं, बहुत से को हम लैब में आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन में, बट पैथोजेनिसिटी के हवाले से मेनली क्या है कि इट इज एंटी-फेगोसिटिक. पाइलस है या पिलाई है, फिम्ब्रिया है, जो मीडिएट करते हैं अटैचमेंट को, अगेन इसकी पैथोजेनिसिटी बढ़ाएंगे. देन सेक्स पाइलस जो है इसकी जो है अटैचमेंट between two cells during conjugation, उसमें इसकी it will take part. फ्लैजेलम से मोटिलिटी आती है. स्पोर्स की वजह से they are highly resistant. स्पोर्स में the keratin like coat and diplocalinic acid जो है, it makes it highly resistant to all sorts of human cells. Dehydration, heat, chemicals, ये सब चीजें बैक्टीरिया को किल करना एक चैलेंज बना देती हैं due to the presence of these spores. प्लाज्मिड again it is responsible for antibiotic resistance, क्योंकि इसके अंदर बहुत से ट्रांसमिसिबल नॉन ट्रांसमिसिबल होता है. ट्रांसमिसिबल जीन्स जो हैं it will spread antibiotic resistance genes. ठीक है. फिर एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, उनके कोड्स जो हैं they can be encoded by the genes on these plasmids. Granules जो हैं they are mainly the supply of nutrients in the cytoplasm, and glycocalyx जिन बैक्टीरिया के अंदर जो लेयर होगी, पॉलीसेकेराइड की ट्रेडिशनल लेयर होगी, they mediate the adherence of these bacteria to the surfaces. और फिर glycocalyx की वजह से biofilms का जो phenomena I told you कि they have a tendency to bind to different prosthetics, implants, and then they make life hell for these sites, for these patients, because then you cannot treat them easily. Antibiotics जो हैं यहाँ तक penetrate नहीं कर पाती हैं, the bacteria become very powerful. So here we conclude our lecture. If there is any question you can ask. Let me check the window again. ठीक है जी. So since there is no question right now, I cannot see any question in the window, but later on if you just go through the chapter, and if there is any question, if there is any difficulty, you can always get back to me. ठीक है जी. And again I repeat कि जिन बच्चों ने अपनी assignments नहीं submit करवाई वो करवा दें. SEQs जो हैं आपके वो इन टॉपिक्स से रिलेटेड जिनके असाइनमेंट्स जिन
टॉपिक्स को असाइनमेंट्स हमने कवर किया हुआ है. वी विल मेनली ट्राई कि उनको हम एससीक्यूज उनके जो हैं उनको कंसिडर करेंगे और हम उनके एमसीक्यूज के टेस्ट पे फोकस करेंगे. ठीक है जी. So it's better that you submit these assignments on time so that we can also decide about your next test contents. ठीक है जी. Take care. Allah Hafiz.